Let's- Okay, let's start with our week one. Basically, it's the overview of our first week of marketing. Know what it is, and I hope so. You are all doing good, and what it is, and how what we can say, how we have to go onward, and what we have to discuss in this session. Now, what it is basically creating and capturing the customer value. That is the first thing, the first topic. So, create and capture the customer value. सबसे पहले. So, first of all, how we can, what we can say, create and capture the customer value. That means whenever we are talking about marketing, generally, first we have to understand the concept of marketing, and then we have to know what the customer is and what will be the wants and needs of the customer that we have to know. Then designing the customer driven marketing strategy, कि हमने customer को कैसे attract करना है, उसके लिए क्या strategies बनाए. And then you have to go for preparing the integrated marketing plans and programs. What are the different plans and programs through which we can capture the interest of the customer? So building the customer relationship, capturing the value from the customer, the changing marketing landscape. So this is what we will study in the next almost 3 chapters. And that is the basic, you can say, introductory session regarding our marketing concept. So first of all, what we have to know, first of all, when we are talking about creating and capturing the customer value, that means how we can create the interest for the customer and how we can give the value to the customer. This is very important. In detail, definitely later on we will discuss. हम इसको देखेंगे later on. But first of all, we have to understand the concept of marketing. Okay, class, this one is the overview. It's about 15 to 20 minutes overview regarding our first week session. Generally, if you want to, up in detail, if you want to go for the detailed discussion and you can say your lesson plans, तो उसके लिए आसान सब की वीडियोस बनी हुई है, उससे आप लोग go through हो जाइएगा. Okay, now what is marketing? Marketing is a process by which companies create the value for the customer and build a strong customer relationship to capture the value from the customer in return. So what we have to see, this one is the cycle. Sorry. So this one is the cycle. That means marketing is the process by which companies create the value for the customer. एक customer के लिए value create करते हैं and that build the strong customer relationship, right? And in return, जब भी हम customer के लिए we are going to do something, so in return customer भी हमें in the form of feedback, customer has to give value to the definitely to you, right? So आपका ये एक direct relationship होता है with your customer. जितनी ज्यादा आप कस्टमर को वैल्यू देते हैं उतनी ज्यादा इन रिटर्न कस्टमर आपको यू कैन से वैल्यू देता है या फीडबैक देता है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेटली जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, उसकी नीड्स और वांट्स फुलफिल होंगी, तो देन यू कैन गो फॉर आप आपके कस्टमर जो है विद वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा मार्केटिंग करेगा, लोगों को बताएगा और ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट सेल होगा. So in that matter, we can say customer is very much important, and in the you can say in that process we can capture the value for the customer to create the profit and customer equity as well. So it's very much helpful. So again, when we are talking about marketing process, that is the next what we can say question or next topic that we have to know. So marketing process के अंदर ये 5 steps हैं जी जिनका हमें पता होना चाहिए. So one by one, we very briefly we have to discuss all these set of steps हैं क्या और इसमें क्या क्या चीजें हैं generally जिसका आपको idea होना चाहिए. First of all, understand the marketplace and customer needs and wants. सबसे पहले जो आपको आइडिया होना चाहिए, सबसे पहले मार्केट प्लेस क्या है. मार्केट प्लेस क्या होती है? वेयर वी कैन सेल आर परचेज द प्रोडक्ट. इट्स अ मार्केट or it's a place where we can sell and you can say purchase the product. So that is first of all we have to know about the marketplace कि कौन सी जगह है, क्या है और कस्टमर की क्या नीड्स और वांट्स हैं, इसका हमें पता होना चाहिए. Then we have to go for design a customer driven marketing strategy. कि आपकी कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, उनको आपने डिजाइन करना है कि आपका कस्टमर कौन सा है, टारगेट मार्केट कौन सी है, कस्टमर किस तरह का है और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द स्ट्रेटजीज फॉर विच यू हैव टू गो फॉर.
Then you have to construct an integrated marketing program that delivers superior value. Another very important thing is then you have to go for making the plans, जिसमें आपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को देखना है कौन कौन से हैं, किस तरह के बनाएंगे आप, प्रोमोशनल प्रोग्राम्स क्या होंगे जिसके थ्रू यू कैन गिव द वैल्यू टू द कस्टमर, राइट, मैक्सिमम वैल्यू टू द कस्टमर। जस्ट लाइक जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, जैसे हमारे डिफरेंट बैंक्स के कस्टमर्स होते हैं, तो जितने ज्यादा हमारे what we can say high profile customer होते हैं, accordingly we have to entertain them, we have to give maximum value to that specific customer। हम sometimes diaries, calendars and other than that different gifts देते हैं, and other than that there are number of things through which we can entertain our customer or we can give the value to the customer। So that is we have to make the plans through which we can give the maximum value to the customer। And fourth one is build profitable relationships and create the customer delight। So what we have to do, we have to go for, at the end, we have to make the good profitable customer relationship। So this one is about our third or fourth chapter in which we will discuss about the overall how we can create the good profitable relationship with the customer, because at the end of the day, customer is your boss and we have to build good profitable relationship with the customer, because at the end marketing is all about it's you know, you can say it's a way of or it's totally what we can say a tactic through which we can give the value to the customer, और customer जैसे चाहता है, जैसे उसकी requirement है, we have to fulfill that requirement। For that reason we have to go for marketing of the product। So जैसे भी requirement है उसके लिहाज से we have to give the what we can say information to the customer। So we have to build the profitable relationships and create the customer delight। So that is the basic thing। Then we have to go for capture the value from the customer in return। So this is very important step कि जब हम एक कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देते हैं, लाइक कैप्चर द वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर टू क्रिएट द प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज करेगा उतना ज्यादा कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज होगी, कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग करेगा कि अच्छा जैसे हम व्यूज लेते हैं एक से दूसरे से एंड सो ऑन। तो इसी तरह वो दैट विल बी मूव ऑनवर्ड और दैट विल बी मूव इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस और अ साइकिल। तो उसमें क्या होगा कि आपके एक कस्टमर से दूसरे, दूसरे से तीसरे में मूव करता जाएगा और इससे आपका ओवरऑल customer increase होंगे। So that is about the concept of this is how we can give the value to the customer, and in return we can create the profitable relationship and we can create the we can get the customer equity। So that is about 5 set of steps। It's a complete question। marketing process की बात करें तो इसको in detail आगे slides में भी दिया हुआ है, आप go through हो जाएगा lesson plan में। But generally this one is the overview of that concept, understanding the marketplace and customer needs। So definitely whenever we are talking about this is the place we can market the product, we can sell and purchase the product, we can give the awareness regarding the regarding product। So then you have to know about the customer needs, wants and demands। Now what will be the needs of the customer, states of deprivation? It's generally आपने Maslow's hierarchy of need in detail discuss की होगी। That is exactly the same one, needs, wants, demands को। Needs is about physical food, clothing, warmth and so on। social need होती है, individual need होती है, इन सब का आपको idea है। Then wants form form that needs takes as they are shaped by the culture and individual personality, right? Means if you need that thing but you just want to get that thing, आपको भूख लगी है but you want to take pizza, you want to take some snacks, so it's up to you what you want to take। So it's up to you, that is about as per your requirement, that is about your want। The individual की as per the personality, as per your living style, standards and all that, you have to go for it। वो आपकी wants में convert हो जाती है। But when your wants backed by the buying power, जब आपके पास उस wants को fulfill करने के लिए purchasing power है, तो that will become your demand कि we have to buy that thing। So there are number of examples जो आपकी उसमें slides में है in detail। You can go for it, and we have already discussed all these things। Understanding the marketplace and customer needs, marketing offer
These are the different terms that you have to know. Marketing offer are some combination of products, services, information, or experiences offered to a market to satisfy a need or want. So marketing offer क्या होती है? It's the offerings generally जैसे offer किया जाता है कि अच्छा आप ये buy करेंगे तो you can get that thing extra, or yeah, we can give the discount, we can give the extra promotional you can say schemes or discounts, or what we can say buy one get one free, or extra services आप provide करते हो. जैसे AC इंस्टॉल कराते हैं आप तो इंस्टॉलेशन सर्विसेज फ्री होती हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो. So what it is basically, it's a some combination of products, services, information, or experiences offered to a market to satisfy the needs and wants of the customer. So generally extra services, information, or experience are provide करते हैं through which you can fulfill the needs of the wants of the customer. Marketing myopia क्या है जी? Generally, we are going through from the basic concepts. Now, what is marketing myopia? जब हम myopia की बात करते हैं, word myopia, that means we are it's just focusing on the current vision. आप in detail, आप longer term के लिए in future you are not thinking about the future. आप future के लिए नहीं सोचते हैं. You are just focusing only on the existing wants and losing sight of the underlying consumer needs. One thing. That means you are just focusing on the wants कि अभी customer को क्या चाहिए, वो क्या buy कर सकता है. You are not focusing on the basic needs and requirement of the customer. कि उसकी basic needs क्या है. आप कोई भी ऐसा product बनाते हैं जिसमें हमें what we have to see, what's the basic requirement, what's the basic need of the customer. हम उसको नहीं देखते हैं. We just want to capture that market. Currently हम उस सिनेरियो को, उस सिचुएशन को, उस मार्केट को देखते हैं और हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. तो वो आपका किस में आ जाता है? वो आपका मार्केटिंग मायोपिया का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि दैट मीन्स आप जब मायोपिया वो होता है कि आप विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, आपकी लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है, आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच नहीं रहे होते हैं कि अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो 5-10 साल के बाद ये चीज इस तरह ओवरऑल यू कैन से रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी, या इस तरह ओवरऑल व्हाट वी कैन से उसका फीडबैक आएगा, या उसका इम्पैक्ट होगा. सो हम इम्पैक्ट उसका देखते हैं. दैट इज ओनली फॉर द करंट सेल, दैट इज ओनली फॉर द करंट मार्केट, एंड दैट इज बिट व्हाट वी कैन से प्रॉब्लमैटिक थिंग. और जब हम कोई भी चीज करंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जस्ट करंट मार्केट को देखते हैं, करंट सिचुएशन को, करंट रिक्वायरमेंट, डिमांड्स, नीड्स को देखते हैं, हम फ्यूचर और ओवरऑल बेसिक नीड्स को नहीं देखते हैं, तो फिर मार्केटिंग मायोपिया क्रिएट होता है. मार्केटिंग मायोपिया है क्या? इट्स व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द customer, whatever the wants and demand of the customer at that time, you are just focusing on that thing. और मायोपिया में ये होता है कि we just want to capture the market at that time. हमने बस उस मार्केट को, जैसे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा आप बनाते हैं, जब ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं तो उसी तरह का प्रोडक्ट प्रोडक्शन आप ये नहीं देखते हैं. अच्छा, जैसे आप सपोज ग्रीन ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से था, इट्स लाइक फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इट्स लाइक आपको लगेगा कि उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट इन फ्यूचर व्हेन यू हैव टू गो फॉर इट, तो लॉन्ग लास्टिंग अगर देखें तो वो मार्केटिंग मायोपिया को डिस्करेज करता है. सो जो मार्केटिंग मायोपिया है उसमें यू हैव टू गो फॉर शॉर्ट रन, आपका जो फोकस होता है, और उसमें यू जस्ट वांट टू गेट द प्रॉफिट और आउटकम इन दैट शॉर्ट टाइम पीरियड. So that will develop the marketing myopia concept when you are not focusing on future and you are not going for the basic needs of the customer. Okay, marketplace and customer needs के जो concept हैं कौन से हैं? Customer value and satisfaction expectation. Generally, whenever we are talking about the customer, first of all, we have to know about the needs, wants, and demands of the customer, right? That already we have discussed about that thing. So we have to give value to the customer, and in return, definitely the basic thing is your customer must be satisfied, fully satisfied. It's very important. जो हमने देखा था हर्बर्ग टू फैक्टर थ्योरी के अंदर, टू satisfaction is very important. So marketers set the right level of expectation. By the way, Husberg was about employees. This one is about customer. Set the right level of the expectation and not too high, not too low. Marketers की अगर बात करें उनकी expectation या satisfaction के point of view से, so you have to set the right level of expectation. It's moderate level of expectation, not too high, not too low.
So this is very important. Now, next one is understanding the marketplace and customer needs as well. So you have to understand the marketplace and customer need. Another concept that is about exchange. We know very well about the concept of exchange. It's the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return, right? So you have to give something and you have to get something. And that can be in the form of आप cash दे रहे हैं किसी object के against, या कोई object purchase कर रहे हैं in return of cash, या उसके against you are taking some specific object, whatever it is. It's the concept of exchange. We know जैसे कोई चीज देते लेते हैं, right? Now, next one is about understanding the marketplace and customer needs. Now, marketers are the set of actual and potential buyer of the product. We know very well it's the actual potential buyer of the product जो marketer होता है आपका. We have different number of what we can say factors when we are talking about major environmental forces जिनको हम कह सकते हैं. सप्लायर होता है जी जो सप्लाई करता है, कंपनी होती है जो उसको बाय कर रहा होता है, कंपैटिटर होता है जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है. सो डेफिनेटली सप्लायर इज सप्लाइंग द प्रोडक्ट टू एवरीवन, राइट? सबको करता है. अब हाउ यू हैव टू गो फॉर इट, आपने अपनी स्ट्रेटजीज बनानी होती है. मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, बैंक्स होगी एंड ऑल दैट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये सब इंटरमीडिएट्स होते हैं. आपका ब्रिज एंटिटी जो होती है या सेंट्रल पॉइंट जो होता है जिनके थ्रू यू हैव टू गो फॉर मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स करते हैं. अच्छा, यहाँ पे मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट आपकी मार्केटिंग कंपनीज भी हो सकती हैं जो एज ए इंटरमीडिएट्स काम कर रही होती है. मार्केटिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं जिनके थ्रू यू कैन मार्केट योर प्रोडक्ट एंड ऑल दैट. जैसे आप सपोज कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं और उसमें यू जस्ट वांट टू के आप खुद मार्केटिंग नहीं करते हो, मार्केटिंग के लिए किसी एजेंसी को हायर कर लेते हैं या किसी बंदे को हायर कर लेते हैं, तो एट दैट टाइम दैट पर्सन इज एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट, राइट, थ्रू विच यू आर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट और ब्रांड और बिजनेस. आप खुद नहीं कर रहे, उससे करवा रहे हैं, तो वो इंटरमीडिएट में आता है. कंज्यूमर डेफिनेटली that is जिसको हम कहते हैं customer is your boss, consumer is the person who has to consume your product. So these are the 5 major factors, forces regarding any environment जिसमें supplier और consumer outside the environment है. बाकी आपके generally intermediates भी mediaries भी outside the environment होता है. Okay, this is the last slide. Generally ये ओवरव्यू है और इसको इन डिटेल आप लेसन प्लान से गो थ्रू हो सकते हैं. डिजाइनिंग अ customer driven marketing strategy. Marketing management is the art and science of choosing the target market and building the profitable relationship with them. That we know very well. It's the concept of marketing and management. दोनों को combine किया. Management में we have to go for overall how we have to manage everything. And it's an art and science of choosing the target market. That is the basic thing, a requirement of the marketing, and building the profitable relationship. So building the profitable relationship भी आपकी management में आ जाता है. So marketing management, again, you have to go for choosing the right, you can say target market and build the profitable relationship. And profitable relationships are very important. If it is like very short term जो आपका relationship है तो that effort is like useless. So long term relationship maintain करना बहुत important होता है, and customer is very important for you. What customer will we serve? That means how and what we will serve to the customer, whatever the requirements. How can we best serve these customers? Best form है how you can sell them, how you can serve them, right? कैसे आप उसको manage करेंगे and all that. So that is about your first week, and it's you can say overview of the basic marketing concept. Definitely next chapter we will go for the detail. So thank you so much for this session class for this week as well. Thank you so much.